Right, yes. So who could tell me? I hope you can see my screen, right? All of you? हाँ भाई. Okay. So who could tell me quickly from where can I find a firewall? कितने firewalls हैं मेरे इस पूरे infrastructure में? Search for firewall. Yes, guys. No rocket science. It's very simple, guys. You just had to search for firewalls. और अगर यहाँ पर कोई firewall होता तो आप लोगों को दिख जाता. If there is no firewall, you'll see 0. If you want to create one, you can create it from here. And this doesn't apply to firewall, it applies to each and every resource. If you want to look for network security group, you click here and you will see all network security groups, provided you have access to all resource groups. At least read access तो होना चाहिए, but in my subscription मैंने सबको read access दे रखा है. No matter what level of access you have, at least you can see all of these. Maybe you can create something in your own resource group, but you can see all of these. और हर कोई एक दूसरे का resources देख सकता है. So you just have to come here, click on firewall. If there is any firewall, you will see it. If no, then you can't see it. Right? So yes, firewall. Yes, but that is a correct answer, Henry. We could look for search for firewall also, but in this case, we do not have any firewall. ठीक है. So I'll troubleshoot on this machine. I will not be doing that here. उसमें हमारा ज़्यादा time waste हो जाएगा. Now let's start with NSG. काफी time से pending है topic. I want to finish this today. इसका practical में भी हम Monday को कर लेंगे. But let me explain it to you. Okay. So we discuss this. We discuss properties, logs. ये सब हमारा हो गया. Only pending options we have: inbound security rules and outbound security rules. If I click on overview, I see both of them. यहाँ पर inbound and outbound दोनों भी यहाँ पर मुझको दिख रहे हैं. These are default rules. What do you mean by default rules? Default rule का मतलब होता है कि the moment you create one, उसके साथ by default आ जाते हैं. By default उसके साथ आ जाएंगे. And if you while creating machine, if you guys remember, जब हम उसको एक checkbox select करके ये करते हैं, कौन कौन सा हम लोगों को चाहिए 3389 वगैरह. Do you guys remember that? Under networking section we do that. Jafar bhai must have done that now while creating a machine. So there whatever you select, then that is not default. Default के साथ आप उसमें कुछ add कर रहे हो. So where can you see that? वो आपको यहाँ पर दिखाई देते हैं. If you see, these are 3 default. यहाँ पर लिखा हुआ भी होगा कहीं पे. Okay, I think default लिखा हुआ नहीं है. ठीक है. So these are default rules. Default. Inbound के default, outbound के default 3. Application security group और load balancing हम बाद में देखेंगे. So ignore them. And this one you guys have added while creating a machine. While creating the machine, you have added it. Is it clear to all of you? What is the difference between default and what is the difference between added rules? Yes, guys, anyone who doesn't understand this or any questions related to this? See, I can delete this. The one which Jafar created or the one which you created or I create, we can delete them. But can you delete a default group? Oh, sorry, a default rule. What do you think, guys? Can I delete a default rule? No. Okay, They are let's the see. base set of rules that we get. Okay, so I click here and you see, we cannot delete it. We cannot delete it. Can I add a new one? Let's see. And what is this? I will explain it to you later. जब हम करते होंगे तब इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले, so don't worry. See, I can add a rule. Is it clear to all of you? Default and created rules. Default are which? Default rules are those rules which we get while creating our network security group. जब आप करते हो और कुछ भी ये नहीं करते हो तो ये 6 rules हम लोगों को by default मिलते हैं. Make sure you remember this. ये बहुत बार आता है इंटरव्यू में क्वेश्चन that what are the default rules we have in network security group. बहुत easy है, जब हम इसको explain करेंगे ना, then we will see it. Anyone has any doubt, guys? थोड़ा सा वो ज़्यादा downloading होने वाला है, so I want to ask
and then proceed. Anyone who did not understand anything yahan tak? Amit, clear? 500, that is deny Yes. all inbound. It is set to deny. So how other things are allowed? We'll discuss that. We'll come to that, Henry. We are yet to discuss कि इसका क्या मतलब है, इसका क्या मतलब, ये any का क्या मतलब है, protocol का क्या मतलब. We'll discuss that. As of now, did you guys understand the default security rules, inbound and outbound security rules? What do you mean by default, and what is the difference between default and the one which we are creating? Are you guys clear on that at least? Jafar, Sanmitra, Srishti, Juhi, Amit. हाँ भाई clear है. Yes. Yes. So default is something which you get while creating your network security group, and the created is obviously what you create separately. From where can you create separately? While creating a virtual machine, you can select those boxes, those 4 checkbox, if you guys remember. Which options do we get? Can anyone quickly tell me? वो 4 box में कौन कौन से पोर्ट के options मिलते हैं हम लोगों को? HTTP, HTTPS, SSH, RDP. Perfect. But are those the only port we have? नहीं, we have many ports. This is the last number of the port, I think. 1 से शुरू होता है और 65,500 इतने ports हैं हमारे पास. By the way, this is not the port number. ठीक है, ये port number नहीं है, ये number मैं बता रहा हूँ. Let's check. I can give you the exact number. So this is the list of ports, and don't worry, ये किसी को याद नहीं है. Okay, my bad. I think 65 से भी ज़्यादा हो गए. Here it is. I think 65,535. ये कुछ रेंज है 1 से लेकर. ठीक है, ये किसी और चीज का रेंज है, बट टोटल 1 से लेकर यहाँ तक जो है, कुछ रिजर्व हो गए, कोई फ्री हो गए, कोई किसी चीज के लिए हो गए. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट. और वो टोटल नंबर भी आपको याद रखने की जरूरत नहीं. आई एम जस्ट शोइंग इट टू यू गाइस. ठीक है, पोर्ट 1 से लेके 65 समथिंग उस रेंज तक कुछ पोर्ट्स है. सो यहाँ पर 3 डिफॉल्ट पोर्ट्स दे रखे हैं, और द वन विच वी क्रिएट वहां पर 4 हम लोगों को बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज पोर्ट्स को दे रखा है. RDP, SSH, HTTP, HTTPS बहुत ज्यादा frequently use होते हैं, इसलिए they have given it. But that is not the only place from where we can edit this list. So we can come to network security group, और यहाँ पर आकर भी हम इस list को edit कर सकते हैं. Now this is just we are under overview. Do you see any option to edit or delete anything? By the way, this delete option है यहाँ पर, but default security group cannot be deleted. If you see, default security rules cannot be deleted. So from where do you think I can edit this? I can add or remove some role. यहाँ से कौन सा पैनल यूज करूं मैं? लेफ्ट साइड से, लेफ्ट पैनल में जो देख रहे हो आप. I am under overview now. So which panel I should be using? Which option? Yes guys. Which option should I be using? You'll find your answer here. I am here under overview. I'm asking where should I click? Exactly, inbound rules. If I want to create a change, make changes in inbound, I'll have to click on inbound. If I want to make changes in outbound, I have to click on outbound. Now let's before we start doing that, here we get an option to add, or we get an option to delete. Now I don't have any delete option because I have not selected anyone, and I'm not able to select anything because there are only default rules. Okay, so if I create one, then I'll get an option to delete. But before we do that, let's understand the difference between inbound and outbound, and then we'll go there. What do you understand by the way, inbound and outbound? Is difference आपको क्या ये लग रहा है उसमें? Let's say this is my machine. This is a user. And here I have some maybe YouTube, Facebook, Gmail, Google, etc.
Okay, this is my VM. Now a user is trying to ping. This user from his laptop is trying to ping. Ping is nothing. I have showed it to you guys. Let me show it to you again. It is just a method to check a connectivity to something. So if I do ping google.com, I'm getting a reply, which means I have that connectivity. Okay, so if this user is doing a ping sitting on his laptop to this machine, इस VM का जो भी IP होगा या नाम होगा, उस मशीन उसको वो पिंग कर रहा है, ये इसको पिंग कर रहा है. So what do you think, which kind of request it is for this VM? Will it fall under inbound rules or outbound rules? Inbound. Anyone has doubt? कोई doubt है किसी को इस चीज पे? Okay. Now this user sitting on this machine, this VM, is trying to access facebook.com or Yahoo or Google or YouTube, anything. What kind of access it is? What kind of traffic flow it is? Is it inbound or outbound? Outbound. Outbound. Now someone from this PC is trying to take a remote back to some other user. What is it? Inbound or outbound? It is going from here to here. This is the direction. There's some machine over here. यहाँ इसको ये remote ले रहा है. This person taking remote onto this. Inbound or outbound? Inbound. And why is it inbound? I guess outbound. Yes, it is outbound. The only difference here is यहाँ पर ये port 80 का ये ले रहा है या port 80 या port 443 से access कर रहा है. If it is an HTTP site, port 80, HTTPS port 443. यहाँ पर same चीज ये port 3389 पे कर रहा है. But someone sitting here is taking request or trying to connect to someone. It's your outbound. यहाँ से जो भी request out जा रहा है, that is outbound. Now this person is trying to take RDP. It is inbound. Now this person is trying to access a website which is hosted on this server, which sort of request it is and which port it requires, which protocol or port it requires. Inbound में चाहिए होगा या outbound में चाहिए होगा और कौन सा port चाहिए होगा इसको. He's trying to access a website on this server. Yes, guys. Anyone? Yes, you're correct, Auntie. Is it that difficult, guys? A user is trying to remote to that machine, or a user is trying to access a website on this machine. How are they different? So is it inbound or outbound? And if it is inbound, then which port? Outbound, then which port? Inbound HTTPS. Correct. What else it could be? Inbound, one more protocol it could be for website. It could be either HTTPS or HTTP. If it is a secure site, then HTTPS. If not, then HTTP. But what are the port numbers for that? Yes, what are the port numbers for HTTP and HTTPS? So HTTP is 80 and HTTPS is 443. Right. So I hope you guys are getting it. Now, if there is any NSG network security group on this machine, और अगर ये हम लोगों का business requirement है, so they will have to make sure कि इस NSG पे यहाँ पर port 80 inbound में खुला है, port 443 inbound में खुला है, port 3389, please excuse me for this writing, guys.
3389 it is open. If this is your business requirement, then you'll have to make sure कि ये सारी चीजें खुली है, right? Same in the outbound case कि अगर इस सर्वर को let's say that no one logs into server, कोई सर्वर पे बैठ के ब्राउजिंग नहीं करता है फेसबुक वगैरह की, बट मे बी कोई डेटा शेयर करना है, किसी तरह की सर्विसेज देनी है, बट बैकग्राउंड में या प्रोग्रामेटिक एक्सेस या कोडिंग में कुछ ऐसा है कि दिस विल कनेक्ट टू सम, एग्जाम्पल के लिए ये जो है आपका वेदर फोरकास्टिंग वाला सर्वर है, ठीक है, वेदर बताने वाला सर्वर है, यू आर अ यूजर, यू वांट टू एक्सेस दिस वेबसाइट, इसकी वेबसाइट पे आके आप वेदर देखना चाहते हो, बट नाउ वेदर देखना इट इज नॉट अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट, एक सर्वर लगा देने से आप वेदर नहीं देख सकते हो, राइट? वेदर चेक करने के लिए क्या चाहिए होता है आप लोगों को? नाउ जस्ट गोइंग टू अ वेबसाइट, लेट्स से आई एम गोइंग टू दिस वेबसाइट, लेट मी शो इट टू यू गाइस, आई होप दिस क्लियर्स. Okay, this is AccuWeather. Now let's say ये मुंबई का कहीं बता रहा है, ठीक है. If I type पुणे, यहाँ का बताएगा, ठीक है. टू कैच दिस वेदर गाइस, ये जो इन्फॉर्मेशन आ रही है, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन, डू यू थिंक ये ऐसे ही आती है इन्फॉर्मेशन हवा में? कैन यू हाईलाइट द कर्सर समटाइम्स इन पेंट, इट इज हार्ड टू फॉलो दैट स्मॉल आइकन. श्योर, यू शुड हैव टोल्ड मी दिस बहुत पहले. अगर नहीं समझ में आ रहा है तो यू शुड टेल मी, इसको मैं कुछ किसी और टाइप का कर्सर ले लूंगा. Okay, so to get this information guys, it is very costly. बहुत बड़े बड़े से इक्विपमेंट वगैरह लगते हैं, जिसको भी इस बारे में ज्यादा बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी, they know it well कि वेदर फोरकास्टिंग जो है इट इज नॉट अ स्मॉल टास्क. बहुत बड़ी मशीन्स लगती है, बहुत ज्यादा मशीनरी लगती है, बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंसी में लगती है. मतलब पुणे में ही जानने के लिए कम से कम एक 4 से 6 जगह ये लोगों ने कुछ इक्विपमेंट्स लगा रखे होंगे. सो इज इट पॉसिबल फॉर एवरी वेबसाइट टू डू दैट? इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना हर वेबसाइट के लिए, हर छोटी सी वेबसाइट के लिए, इज इट पॉसिबल? नाउ इफ यू सी, आपको n नंबर ऑफ वेबसाइट्स दिख जाएंगे या फिर आपके एंड्रॉइड एप्स दिख जाएंगे जो आपको वेदर का इंफॉर्मेशन देते हैं, but not all of them have investment crores of rupees or billions of dollars or trillions of dollars to purchase those machines and install them. They have not done that. So how they do work on this is called API. कई लोगों ने, आप लोगों ने API सुना होगा. So they will create their own website. अपना खुद का ये लोग एक sorry guys, so they will have their own website, अपना एक अपना वेब पेज होगा, सब कुछ होगा, अपना डिजाइन होगा, कंपनी का लोगो होगा, everything will be there. But ultimately वो भी किसी और की सर्विस को बोरो कर रहे होंगे. So the moment user comes here using port 80 and access their website and says that I want to see Pune's weather, so ये भी क्या करते हैं, इस रिक्वेस्ट को इमीडिएटली यहाँ से उठा के दे विल एक्सेस सम अदर वेबसाइट जिन्होंने एक्चुअल में ये कर रखा होगा, जिन्होंने एक्चुअल में इंस्टॉल्स कर रखे होंगे, एंड दे पे देम फॉर सम रीजन, किसी भी तरह से पे करते हैं टू यूज देयर एपीआईज. दैट डजंट हैपन फॉर फ्री. वो वेबसाइट्स के बीच में जिस भी तरह का अग्रीमेंट वगैरह होता है, दे डू इट, और लिटरली इनको ब्राउजर पे जाके नहीं करना होता है, ठीक है. ये इनके एप्लीकेशन का काम होता है कि किस तरह वो प्रोग्रामेटिक एक्सेस के थ्रू वो इन्फॉर्मेशन वहां से फेच कर लेगा. बट अल्टीमेटली मतलब दिस वन विल हैव टू गो टू देयर वेबसाइट. आप एंड यूजर की तरफ से जाओ कोई, या रोबोट जाए आपकी तरफ से. So which port is required for this machine and at what level? Because this machine is also going to access some website. तो या जैसे यहाँ पर हम लोगों को inbound में port 80 required था, which port or protocol is required here and at what level? 443. Yes, again it could be either 443 Okay. or 80, but at Okay. what level? Inbound, outbound? Outbound. Outbound, right? Inbound पे तो हमारे पास already है. So in this case, this machine requires both of them. Inbound पे भी चाहिए और outbound पे चाहिए, तभी इसका पूरा functionality cover होगा, तभी लोग इसके वेदर देखने के लिए इसका वेबसाइट एक्सेस करेंगे, तभी they will get advertisement और उनको पैसा मिलेगा. Ultimately it's all about numbers.
कि कितने नंबर कितने लोग हिट कर रहे हैं हमारी एप्लीकेशन पे एंड देन दे विल गेट एडवर्टाइजमेंट्स। या तो फिर मे बी ये कोई पेड सर्विस रखेंगे कि आपको अगर वेदर चेक करना है यू विल हैव टू पे 1 रुपी, और यहाँ पर ये इनसे कोई 50 पैसे में लेते हैं, जिस भी तरह का इनका अपना सेटअप हो। बट टेक्निकल रिक्वायरमेंट क्या होगी, that you will require port 80, port 443 यहाँ पर, and you will require outbound may be same. Plus, why do you think 3389 is required on this server? No user is going to RDP to this machine. Why do you require 3389? Why do you think 3389 is required? कोई यूजर तो हमने कभी फेसबुक का आरडीपी लिया, आप लोगों ने कभी फेसबुक का आरडीपी लेकर ट्राई किया है क्या? We won't do that, For right? troubleshooting purposes. Exactly, for troubleshooting purposes, for upgrade, for update, उनको अपनी वेबसाइट अपडेट करनी है, कुछ उसमें चीजें ये करनी है, कोई लोगो चेंज करना है, फॉर एनी रीजन सर्वर शट डाउन हो गया है, मे बी उसका रैम अपग्रेड करना है, उसका हार्ड डिस्क का साइज अपग्रेड करना है, कुछ चीजें डिलीट करनी है, कोई सेशन हैंग हो गया उसको डिलीट करना है, फॉर एनी रीजन, फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस। No end user is going to take remote, but इनके जो internal system engineers हैं, they will require their 3389 वाला port, so they can log into this machine and do some work. Is it clear, guys, that how is it important, और inbound और outbound में difference समझ में आ गया आप लोगों को अभी? Okay, Yes. one more thing. Now let's say that यहाँ पर port 80 इसने अपने outbound में open कर लिया है और inbound में भी open कर लिया है, ठीक है? This is outbound और inbound दोनों में port 80, यहाँ से request आ रहा है, fine, it's looking for weather वाला forecasting, इसका जो भी application जिसकी coding है, they did some magic whatever they wanted to do, और यहाँ से एक request चला गया, इसका port 80 open है, that is fine, यहाँ से चला गया, but this machine जो हमारी है भी नहीं, इसके ऊपर port 80 बंद है, ये request पूरी होगी क्या? Will this request be completed? No, right? तो हर जगह से जो है जहां पर भी रिक्वायरमेंट है वो होना चाहिए। हाँ, दिस गाइस कैन से कि यहाँ हम लोगों को आउटबाउंड में पोर्ट 80 की जरूरत नहीं है, सो मे बी दे कैन कीप इट क्लोज, बट इनबाउंड में इनको भी पोर्ट 80 ओपन रखना होगा ताकि ये रिक्वेस्ट यहाँ से आ जाए। So there are some tools, there are some commands which you can check, which you can use to check कि मेरी रिक्वेस्ट इस पोर्ट के थ्रू जा रही है क्या। One of them is telnet. Telnet is the command. You don't have to remember this. I'm just showing it to you guys. Google.com and let's say 443. Okay, that's PowerShell. Sorry, I'll have to do that on CMD or PowerShell का command. But this is the command which you can use, a telnet command, जिसके थ्रू आप ये देख सकते हो कि आप जो है आपका पोर्ट जो है ओपन है या नहीं है, that you can check. कि मेरी रिक्वेस्ट इस पोर्ट के थ्रू जा रही है या नहीं जा रही है। Maybe I'm able to access google.com, but using which port? If you have to check, you can use telnet. You don't have to remember this. You don't have to know. In knowing there's no harm. Information अच्छी चीज है, ठीक है? Let me try it again. I'll go to command prompt. Here. So if you see this page, it means that my port 443 at my level and at Google level both are open. ठीक है? Now let me see if I can access google.com using 3389. You see, इतना टाइम लग गया है, इसका मतलब डेफिनेटली नहीं है। That from my PC, I do not have access, and it clearly says here, could not open the connection to the host. Does it mean google.com down है? No, it means that I have certain level of access. किसी बस पोर्ट के थ्रू ही मुझको access है। Google's inbound 3389 is closed. Yes, it is closed, but उसमें थोड़ा सा tricky है, not for all. कुछ IPS के लिए वो ओपन होगा। We'll see that जब हम अब इस पे जा रहे हैं ना, तो हम देखेंगे कि इतना ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, सिंपल के इट इज ईदर क्लोज्ड और ओपन। ओपन है तो सबके लिए और क्लोज्ड है तो सबके लिए नहीं। दैट इज नॉट द केस। यू कैन कीप इट ओपन फॉर फ्यू पीपल और फ्यू IPs, जैसे वो अपने सिस्टम इंजीनियर के लिए ओपन होगा उनके लिए, और हमारे लिए इट इज डेफिनेटली क्लोज।
Yes, for us it is closed. For sure it is closed. Is it clear, guys? Did you guys understand logic यहाँ पर समझ में आया? So now I can go to this resource, this network security group, and start working on this one. Okay, so here we have inbound rules, we have outbound rules. First let's check them and I will explain to you now. Okay, exactly है क्या यहाँ पर. So this first rule, this is, guys, priority. Priority का क्या मतलब होता है? These are not ports. Number similar लग रहे हैं ना, इसलिए इसको confuse मत हो जाओ ports से. ठीक है? And let me show it to you. Priority का भी एक limit होगा. The minimum number of priority is between 100 to 4096. This is the number you can use for priority. इसमें जो नंबर दिख रहा है आपको 65,065, वो जो है डिफॉल्ट के लिए. When are you creating manual there is rules, उसमें प्रायोरिटी का नंबर जो है आप 100 से 4096 के बीच में यूज कर सकते हो. ठीक है, तो ये मत बोल देना कि 10 प्रायोरिटी हम दे सकते हैं या 20 दे सकते हैं. Minimum 100, maximum 4096. Now let me explain it to you. What is it? Now let's say that I have a rules. What rules do I have here? Outbound rules, I'll check. Now outbound rule, what does it say? फिलहाल priority को ignore करो. Allow internet outbound. ठीक है, by the way this is just name. इससे exactly कोई मतलब नहीं है. आप इसको XYZ नाम दे दो तो भी चलेगा ये. ठीक है, this is just a name. So what does it say? It says, हाँ but इसको हमेशा relevant नाम देना है तो ज्यादा easy होता है administration आपका. Allow internet outbound. So what do you guys understand by this? Just looking at the rule, मतलब एक layman क्या समझते हो? can access internet using that machine. Exactly. Machine, subnet, जहां पर भी ये network security group लगा है, those people will be able to access internet. Outbound internet का access दे रखा है. Now it is asking port. So from any port, protocol, any protocol. Why do you think this we have difference here? मतलब इंटरनेट का ही एग्जांपल लेके बता दो कि दो ऑप्शन, मतलब any का ऑप्शन क्यों है? Why not to stick to one port? Yes guys, why not to stick with one port? Because for internet we have two ports, 80 and 443. Similarly बहुत सारी सर्विस के लिए मल्टीपल पोर्ट्स होते हैं और मल्टीपल प्रोटोकॉल्स भी होते हैं. Is it clear? Then why do we have this? Why वैसे हम क्रिएट करेंगे तो इसको मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूँ. Now what is the source? Source मतलब any, किसी भी सोर्स से आ जाए. Not from any particular IP. इस particular IP से ही नहीं आना चाहिए, किसी भी सोर्स से आ जाए. Now what is the destination? इंटरनेट पे कहीं पर भी चले जाए. Don't worry guys, I'm taking it a bit fast because now the aim is not to understand this. What I'm trying to explain to you guys is this one, priority. इस point को explain कर रहा हूँ मैं. इसको जब मैं explain करूंगा तो इसको मैं काफी डिटेल में समझाऊंगा. ठीक है, so what does it say? Allow internet from any port, from any protocol, sorry, from any source to any destination. And what does it say? Action is allow. मतलब इंटरनेट को ये allow कर रहा है. Now my requirement is to deny the internet on this machine. What can I do? Quickly guys, we have only 9 minutes. What can I do? I want to I don't want people to access internet from this machine. So what can I do? What do you think we can do? Not give access to 80 and 443. How? It has already Under given. inbound port. Sorry, Under inbound port, if we restrict the why access, how is it helping me? Inbound is blocking on inbound is helping me. I hope you Okay. understand the difference here. Inbound पे मैं यहाँ पर block कर दूंगा ना तो इस request को मैं block कर रहा हूँ, but यहाँ से internet still accessible है. How is it helping right. me? Right. Can I delete it directly? Exactly, that's the answer I was looking for. Rather question. Can I delete it? You tell me. What did we discuss? I mean, deleting would have been the simplest option.
कि ठीक है मुझको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए, ये मुझको नहीं चाहिए, simply These go are ahead and delete it. default, so we cannot delete now, right? Right. So can we delete it? No, we cannot. So what do we do now? तब ये जो है प्रायोरिटी वाला आपके काम में आता है. So now what can we do? Because default rule है जिसको हम delete नहीं कर सकते हैं, ठीक है. So in this case, what you will have to do, you will have to create one more rule, similar rule. बस यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर जो आपने allow कर रखा है उसको deny करना होगा. इस allow को, जैसे ये deny है ना, but ये this deny is for something else. So इसको जो है deny करना होगा. But now the question is कि for similar rule, if I have for similar parameter, if I have two rules, then which one will work? कौन किसको supersede करेगा? इसके प्रायोरिटी नंबर सबसे कम होगा. इसको प्रायोरिटी. ओके. Yes, who says कम होगा? हिंदी. Yes, and from where did you get this information कि कम होगा या ज्यादा होना चाहिए? I mean logically ज्यादा होना चाहिए या कम होना चाहिए? Logically तो I would say ज्यादा होना चाहिए, but from where did, though it is correct. I have worked on it, like website. Okay, great. But okay, if someone who doesn't have work, उसके लिए भी who hasn't worked, who doesn't have that access, उसके लिए भी it was easy to guess. Why? Because if you see 65,000 इनके हमेशा जो है numbers इतने हैं, and the one which you are going to create एक outbound rule में आप अगर कोई create करते हो तो maximum number what can you have? Between 100 to 4096. तो अगर upper number priority लेने वाला है तो आप कभी achieve ही नहीं कर पाओगे उसको. So priority हमेशा lower number लेगा. Is that clear, guys? Anyone who did not understand, please let me know. Yes, guys. Anyone who did not understand. Forget that. उस rule को भी भूल जाओ. यहीं पर मैं example देता. Outbound में there is a rule which says deny all outbound. मतलब हर तरह की traffic. Which port? Any port. Which protocol? Any protocol. Which source? Any source. Destination? Any. What is the action? Deny. इसी रूल ने सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है ब्लॉक कर दी है, सारे एक्सेस सब कुछ पोर्ट ब्लॉक कर दिया है. Despite having this, we can access internet. Why? Because there is a rule which says allow internet. But now if technically or logically if you see these two, they are contradicting to each other. This rule says block everything. This rule says allow internet. ठीक है, ये बोल रहा है कि allow internet and this says deny everything. So why do you think which rule is working, you think, guys, and why do you think whichever is working, why do you think it is working? Yes, guys, give it an attempt at least. If you're not getting it, let me know. If you're getting it, please answer it. Yes, Amit, Juhi, Samitra, anyone? जिसका प्रायोरिटी नंबर कम होगा उसको हम लोग प्रायोरिटी देंगे and we will be following it, right? Right. Not we will be following, system अपने आप ही follow कर लेगा. मतलब हाँ, हाँ, right. नहीं. मतलब जिसका भी ये नंबर कम होगा ना, प्रायोरिटी नंबर कम होगा, वो रूल जो है दूसरे रूल्स को ओवरकम करेगा. प्रायोरिटी नंबर जिसका भी कम होगा वो रूल दूसरे रूल को ओवरकम करेगा. और ये किस केस में होगा? ओनली इफ दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग. ठीक है, एक मेरा आरडीपी का रूल है जिसका नंबर 4000 है और एक मेरा एचटीटीपी का रूल है जिसका नंबर 100 है. उसमें मैं बोल सकता हूँ कि यार ये इसको कॉन्फ्लिक्ट करेगा, ये इसको ये इसको ओवरकम करेगा. नहीं, बिकॉज दे आर नॉट एट ऑल कॉन्ट्रडिक्टिंग. ओवरकम का क्वेश्चन तभी आएगा इफ दे आर कॉन्ट्रडिक्टिंग टू ईच अदर. So in this case, these two rules are contradicting to each other. How? This rule says that deny everything, deny any traffic from any port, from any protocol, from any source to any destination, and the action is deny. On the other hand, this rule says no, allow internet from any port, from any protocol, from any source to destination, internet destination. It is saying allow. तो ये दोनों एक दूसरे से conflict कर रहे हैं. तो in this case we will see कि कौन सा वाला रूल हमारा चलने वाला है. So which one will work in this case and why?
this one will work. Why is it? Because the priority number here is 6501 and this is 65,001 and 65,500. तो इसका प्रायोरिटी जो है इससे ज्यादा है. इसका नंबर, the smaller number has the higher priority. Remember that. So now coming back to my question that I want to stop internet on this one. So who can quickly guide me? There are only 2 minutes left. Who can quickly guide me कि क्या रूल बनना चाहिए और कैसा बनना चाहिए? First thing, inbound में बनेगा, outbound में बनेगा रूल. I want to block internet access. No one should be able to access internet from this machine. Programmatic हो, manual हो, किसी भी तरह का मुझको internet access ही बंद करना है. Inbound में होगा, outbound में होगा. Outbound. Right? Outbound. Okay. Outbound. So let's go to outbound rules. Where do I click now? Where do you think I should click? Add. Add. Source क्या है मेरा? Okay. Here, see, if I select IP address, ये कैसे काम में आएगा पता है? IP address जो है ना, आप यहाँ पर CIDR दे सकते हो. If you are applying it on a subnet वगैरह या फिर एक मशीन पे multiple IPs भी होते हैं. ठीक है. So if you want to block from one specific IP, you can do that, but we'll see that later. As of now, I'm taking any. Source port range, कौन से ports को block करना है या overall internet को ही block करना है? Let's say कि I want to block 80 वाला ट्रैफिक और 443 को अप्लाई कर रहने देना है. सो आई कैन ब्लॉक 80 यहाँ पर लिख के. बट इन दिस केस आई वांट टू ब्लॉक ऑल ऑफ देम. डेस्टिनेशन सिर्फ किसी पर्टिकुलर को ब्लॉक करना है कि फेसबुक का आईपी मैं यहाँ पर लिख दूंगा और वो ब्लॉक हो जाएगा, या मुझको सब ब्लॉक करना है. सो आई गो विद दिस. HTTPS हम लोगों को दोनों ब्लॉक करना है. ठीक है. सो आई कैन इधर कीप इट कस्टम और यहाँ पर मैं दोनों लिख सकता हूँ, or I can keep it star. I hope this will take star. हाँ. Protocol TCP UDP ये हम बाद में देखते हैं. As of now, let's say all. Action क्या चाहिए हमको? Deny करना है कि allow करना है इंटरनेट को? Deny. Deny करना है. Yes. ठीक है. This is just a name. इंटरनेट ये नाम है, कुछ भी दे सकते हो आप. इंटरनेट डिनाई रूल. ठीक है. इंटरनेट डिनाई रूल. What should be the priority, guys? Anything lesser than this number should be fine. And this is it. It's done. यहाँ पर आ जाएगा, वो ब्लॉक हो जाएगा. It's about to finish. We'll see you guys on Monday. I'll try to give you some task for this weekend, and we'll see you guys on Monday. And if anyone has any questions, please let me know. Here it is. Deny. Practical करके देखेंगे हम लोग. Don't worry. Machines वगैरह बना के how it applies वो भी हम लोग देखने वाले हैं. It is going to take long time. Okay. I'll stop the session for now, guys. Thank you. Thank you. Bye. Yes.